Hello and welcome to FYI Plus. I am Sunil Jha. Thank you so much for connecting. Mr. Nawab Malik hasn't got any relief yet, so that means he will have to continue to be in the custody of Enforcement Directorate. Enforcement Directorate custody has been extended till 7th of March, and Mr. Nawab Malik, who would be hoping that he would be out of the custody of ED today in connection with serious charges of having some kind of a connection with Dawood Ibrahim's gang member, is not going to come out of the custody today because his custody has been extended by a Mumbai court till 7th of this month. यानी अगर उम्मीद कर रहे थे नवाब मलिक कि उनको रिलीफ यानी उनको रियायत मिल जाएगी कोर्ट से और वो घर वापस जा पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि 7 तारीख तक उनकी क्वेश्चनिंग बढ़ा दी गई है। यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन 7 तक कर सकेगी। अब ये इंट्रोगेशन क्यों जरूरी है? एनसीबी के मुताबिक मिस्टर नवाब मलिक का जो कस्टोडियल पीरियड था, पुलिस कस्टडी थी टिल 3rd, उसमें से 4 दिन वो उनकी कस्टडी के बजाय हॉस्पिटल में रहे थे। ऐसे में उनकी क्वेश्चनिंग कंप्लीट नहीं हुई, एंड बिकॉज ऑफ विच वी नीड मोर टाइम टू आस्क हिम अ फ्यू अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंट्रोवर्शियल लैंड डील। अब मिस्टर नवाब मलिक के खिलाफ, और न केवल मिस्टर नवाब मलिक, उनकी फैमिली, उनकी कंपनी के खिलाफ जो एलिगेशन है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगाई है वो ये कि मिस्टर नवाब मलिक ने बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट के एक्यूज से कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदी, और वो जमीन जो सरकार के नियम के तहत सरकार को जानी चाहिए थी वो उनके पास आ गई, और वो उस एक्यूज की नहीं रही जिसकी वो थी। यानी अगर वो एक्यूज की होती तो एज पर रूल, क्योंकि वो टेररिस्ट एक्ट में अरेस्टेड था, क्योंकि वो कन्विक्टेड था टाडा केस में, द प्रॉपर्टी शुड हैव ऑटोमेटिकली गॉन टू द गवर्नमेंट। पर मिस्टर नवाब मलिक ने वो प्रॉपर्टी उससे खरीद ली कौड़ियों के भाव में, और अपने परिवार और अपने कंपनी के नाम ये जमीन करा ली। एक नहीं बल्कि 5 जमीन का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, और ये प्रॉपर्टीज बहुत प्राइम लोकेशंस पे प्रॉपर्टी है, यानी बहुत महंगी प्रॉपर्टी है। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी लाखों में खरीद ली गई। अब अंदाजा लगा लीजिए, और यही केस उनके खिलाफ है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस शख्स से खरीदी और जिसने खरीदवाई वो दोनों ही टाडा केस में एक्यूज हैं, कॉन्विक्टेड हैं और सजा याफ्ता हैं। सो दे हैव बीन कन्विक्टेड इन द केस रिलेटेड टू सीरियल बॉम्बे ब्लास्ट, एंड दे आर सर्विंग life sentence in various jails. So that's the charge against Mr. Nawab Malik, that he was hobnobbing with the members of Dawood Ibrahim gang, and the property that he has bought was actually or originally owned by the Dawood gang members. So now he is in trouble because of that. Today was a day when his police custody was ending, but he could not get any kind of a relief and is back in the custody of Enforcement Directorate till 7th, at least 7th of March, which is 4 days from now. Enforcement Directorate made it clear that he hasn't answered a lot of questions. According to them, Mr. Nawab Malik is hesitating or is hesitant in responding to questions. वो सीधे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि जवाब छुपा रहे हैं। ऐसे में इंट्रोगेशन बहुत डिफिकल्ट हो रही है, क्योंकि वो स्ट्रेट सवालों का स्ट्रेट जवाब नहीं दे रहे हैं, वो घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जानना चाहती है उनसे, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और टेरर फंड का मामला है, और उसके तार मिस्टर नवाब मलिक से जुड़े हैं, जो कि महाराष्ट्र के प्रोमिनेंट मंत्री हैं। मिस्टर नवाब मलिक इज द माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर in Uddhav Thackeray government, and he is also a senior NCP leader and the face of minorities in the state. He is not responding directly to the questions or evading answers to critical questions, जिसके कारण बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका जवाब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए उनकी कस्टडी और चाहिए। कोर्ट ने ये बात मानी और उनकी कस्टडी 4 दिन के लिए बढ़ा दी। अब देखना यह होगा कि 4 दिन बाद क्या होता है। क्या 4 दिन बाद उनको वो बेल अप्लाई करते हैं, क्या उनको बेल मिलता है, क्या वो घर जाते हैं, या फिर उनके जो कॉलीग थे फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अनिल देशमुख की तरह उनको भी जेल भेज दिया जाता है।
बीजेपी लगातार इसको लेकर हल्ला कर रही है। बीजेपी के मुताबिक कोई रीजन नहीं है कि मिस्टर उद्धव ठाकरे नवाब मलिक को मंत्री के तौर पर रखें और मंत्रिमंडल में रखें। They want Mr. Nawab Malik to be sacked from the ministry because of his alleged terror links. Mr. Devendra Fadnavis, who was there in the BJP protest today, said that it is unique that a chief minister is not removing a minister who is charged with serious allegations like the one that has been leveled against Mr. Nawab Malik. An enforcement directorate has arrested him on serious charges and still he is continuing to be a minister. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ according to Mr. देवेंद्र फडणवीस, जैसा आज महाराष्ट्र में हो रहा है। एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ इतने सीरियस चार्जेस हैं उसको मंत्री के तौर पे रहने दिया जा रहा है, हटाया नहीं जा रहा है, और ये अपने आप बताता है कि महाराष्ट्र की सरकार किस तरह से फंक्शन कर रही है और कितने प्रेशर में मिस्टर उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं। द वॉर बिटवीन शिवसेना BJP, NCP BJP, Congress BJP is hotting up. BJP is taking a moral stand that anybody who's involved in Bombay serial blast, directly or indirectly, or anyone who has any connect with blast accused should be removed from the ministry as a minister. But Mr. Uddhav Thackeray has his own compulsion. Mr. Nawab Malik is a senior minister, senior NCP leader, and is a very well-known face among the minorities, that is Muslim. So removing him will not be that easy, and politically he knows that very well. So it is virtually or largely the political compulsion which is forcing Mr. Uddhav Thackeray to act against Mr. Nawab Malik. The point is, if 3 days later, 4 days later, on the 7th, if he is sent to judicial custody, which is jail, will Mr. Nawab Malik still continue to be a minister? We'll keep an eye on this news. You also follow this because it's an important development that's happening in Maharashtra. Maharashtra government and the entire politics of Maharashtra has been really on a boil for the last 2 years, and it is refusing to die down. So where is this headed? Let's see what happens on the next date of hearing, that is on 7th, when we'll know whether Mr. Nawab Malik gets relief or he'll sent to jail, like the way Mr. Anil Deshmukh, the former Home Minister of Maharashtra, and also another NCP leader, was sent to jail in an enforcement directed case only, which was again related to money laundering. That's all that I have as far as this update is concerned. I shall be back to talk much more about various other things. There are a lot of stories which are developing right now. They have not developed. The moment they develop and there are information, I shall be back talking to you on those stories. Thanks a lot for watching. Stay connected. Stay safe. We'll be back.